Item number 112, Amit Kumar Singh. ये सब जो डिस्मिस और नॉन प्रोसिक्यूशन के है ना, उसमें एक दे दीजिएगा लाइन ना, dismissal of the writ application shall however not come in the way of the petitioner in seeking their remedy against a fresh cause of action. Yes. Yes, the petitioners lords have prayed for quashing of FIR being Behera PS case number 244 of 2016 lords dated 16th of October 2000. Just a minute, please hold. इसको एक कॉपी निकालिए ना, इतना एक ही साथ क्यों कर देते हैं? क्या मतलब है? एक ही साथ बाइंड कर देना. चाकू देते हैं सर, ये नीचे लेके रुकिए, वो सब फाइल को एक साथ बाइंड कर दिया. एक काट करके निकाल दीजिए, ये वाला यहाँ से काटिए, यहाँ से या यहाँ. वहाँ भी बंधा हुआ, उसको काटिए. दब गया, थोड़ा दब गया. बस हो गया, हटाइए, फाइल दीजिए. दे दीजिए, फाइल कर यहाँ रखिए. Yes, बोलिए. 5th of August 2019 lords, the diary was called for in this case. The petitioner, Yes. my lord, said prayed for quashing of the FIR Behera PS case number 244 of 2016 dated. Ready for hearing? Yes, my lords. All right. Proceed. Dated 16th of October 2016 for offences under section 467, 468, 469, 471, 420, 409 and 34 of the Indian Penal Code. Minutes. It is said, my lords, that the FIR is consequence of an order passed by the Honorable Court in one writ application. Before, my lords, I am allowed to place the FIR. With your lordship permission, I would like to place the order of the Honorable Court passed in CW. Yes, please proceed. 13253 of 2000. Yes. Case page number, my lords, 109 of the writ application. Heard Mr. Sarvadev Singh, learned counsel for the petitioner, and Mr. Amrendra Kumar, learned assistant counsel to the additional advocate general number so and so, appearing on behalf of the state respondents. Yes. With the help of the petition filed in the form of PIL, the grievance expressed by the petitioner is that one Sophia Nizam, his illegality in appointment has been alleged in the FIR, has been illegally appointed and thereby misappropriation of government fund has taken place. Apart from that, the said Sophia Nizam has not been made party. We are of the view that if appointment of Sophia Nizam is by way of commission of fraud, the remedy of the petitioner lies in either lodging of a complaint or lodging of hostile information. In view of the above, as prayed for by the learned counsel for the petitioner, this petition is allowed to be withdrawn. Yes. Taking advantage of this order, my lords, the FIR was lodged after 3 years from date of commission of alleged offence, my lords. After 3 years from the date of this order. From the date of commission of alleged All offence. right. Now, my lords, I may be allowed to place the FIR itself. Captain. The statement, Yes. my lords, begins with page number 27. सेवा में थाना अध्यक्ष. Page number? Page number 27, my lords. The statement begins with page number 27. Yes. सेवा में थाना अध्यक्ष बहेड़ा, थाना बहेड़ा, जिला दरभंगा. विषय: उच्च न्यायालय पटना के CWJC नंबर 100 एंड 100 में पारित आदेश दिनांक 19/9/2016 के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कराने के संबंध में आवेदन. महाशय, उपयुक्त विषय पर सूचित करना है कि मैं SM अली इमाम, पिता स्वर्गीय SS जरीफ
साकिन काजियाना, वार्ड नंबर 7, थाना व पोस्ट बहेड़ा, जिला दरभंगा का निवासी हूँ तथा वर्तमान में वार्ड नंबर 5 नगर परिषद बेनीपुर का सदस्य हूँ तथा वार्ड नंबर 5 में अवस्थित उच्च मध्य विद्यालय कोतवालिया टोला के विद्यालय शिक्षा समिति का अध्यक्ष हूँ। Prior to him being the president of the Vidyalaya Samiti, my lords, the petitioner number 1 was the chairman of the Vidyalaya Samiti, बहेड़ा। वार्ड नंबर 5 के ग्रामीणों से सूचना मिला कि वार्ड नंबर 5 के अंतर्गत कोतवालिया टोला में अवस्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में सोफिया निजाम पिता मोहम्मद निजामुद्दीन, ग्राम 100 एंड 100, जामिया नगर, थाना व पोस्ट बहेड़ा, जिला दरभंगा को फर्जी एवं अवैध तरीके से शिक्षिका के पद पर नियुक्त किया गया है। दिस इज द एलिगेशन इन एफआईआर। तथा अवैध रूप से अवैध व्यक्तियों के द्वारा दैनिक उपस्थिति बनाकर कई वर्षों से वेतन का उगाही एवं निकासी किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उच्च मध्य विद्यालय कोतवालिया टोला, वार्ड नंबर 100 एंड 100, थाना 100 एंड 100, दरभंगा का निरीक्षण दिनांक 18/2/2016 को किया। ही हिमसेल्फ कंडक्टेड एन इंक्वायरी, my lords। जांचोपरंत पाया कि श्रीमती सोफिया निजाम, पिता 100 एंड 100, ग्राम 100 एंड 100, थाना व जिला 100 एंड 100 को मोहम्मद औरंगजेब प्राचार्य, श्रीमती आसमा निजाम, पूर्व पार्षद सह अध्यक्ष, सी हैपेंस टू बी द मदर ऑफ द सोफिया निजाम, my lords, and petitioner number 1 in this case। पति मोहम्मद निजामुद्दीन, he is petitioner number 2, my lords। 3 में निजामुद्दीन, पिता मोहम्मद निजामुद्दीन, पिता 100 एंड 100, पोस्ट बहेड़ा, जिला दरभंगा, सबों ने एक साथ राय बनाकर साजिश रचकर अयोग्य आवेदिका को योग्य दर्शाते हुए अवैध तरीके से तथा सरकार द्वारा निर्धारित नियम का अनदेखी करते हुए सोफिया निजाम को माह अगस्त 2013 से शिक्षिका के पद पर नियुक्त किया तथा सबों ने मिलकर दैनिक उपस्थिति पर फर्जी हस्ताक्षर दर्शाते हुए कई वर्षों से वेतन की राशि रुपया 3,10,000 का निकासी करके सबों के द्वारा राशि का गबन किया गया। Yes. दिस इज द एलिगेशन, my lords। Now, what is the stage of the case right now? I have been informed by my client, my lord, that the charge sheet has been submitted. Then, Charge sheet has been submitted, my lords। then that is not under challenge before this court. No, we are yet to receive the copy of the, my lords, the charge You have sheet. not amended the writ application. Recently, my lords, I can give you liberty to challenge the order taking cognizance as and when the order taking cognizance perhaps is passed. cognizance has not been taken, my lords। Only charge Check sheet कर has been लीजिए. filed। If the charge sheet has been filed, Yes, yes। then the case must have been fixed for order taking cognizance. Yes, yes, that must have been, that must have been। So that will be a fresh cause of action. You could have challenged the charge sheet by amending the writ petition, but I think it is too late. So writ application is of 2017 If FIR and itself, fresh materials have come. if FIR itself, my lords, is a consequence of malicious prosecution, No, it cannot be said on the face of it, it cannot be said. If the allegations mentioned in the FIR yes, without adding or subtracting anything out of it can show that no case is made out against you, then yes, FIR should be quashed. But I tell you my opinion that if the allegations made in the FIR are found correct, then you are liable to be proceeded against. Because if anybody takes an appointment or confers an appointment in whatever capacity to any person who is not eligible for that post, and then that person is retained on that post and he draws salary, so of course the public money, then the element of fraud is. there is no such thing, my lords। Yes. FIR suffers from several factual discrepancies, my lords। I'm not saying that whether it is correct or not correct. I'm only saying that if the allegations are found to be true, then in that case it is liable to be proceeded. FIR as it is cannot be quashed. इसमें तो पुलिस FIR quashing का प्रिंसिपल क्या है आप जान रहे हैं? आज भी हम लोग भजन लाल केस रिपीट करते हैं। जी जी जी। तो भजन लाल केस आप देख लीजिए, 7 exceptions। उसमें हम, मेरे समझ से उसमें ये आता है हुजूर। कौन से क्लॉज में बताइए ना, कौन से क्लॉज में? FIR हुजूर, इसको फिट इन कीजिए, कौन से क्लॉज में कीजिए? अब भजन लाल तो हुजूर काफी लंबा जजमेंट है, अभी तो नहीं याद नहीं, आ रहा है। पैराग्राफ 101, 102
पैराग्राफ 101, 102 वैसे ही टिप्स पर है, अगर इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन तो वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है जिस के आधार पे आई थिंक इट इज 1992 1 सप्लीमेंट्री एससीसी 335। 1992 में है। Malicious 92 का prosecution है। is one of the grounds mirrors on which सबसे डिफिकल्ट ग्राउंड है मैलिशियस। ये इस केस में अपरेंट है हुजूर। इसमें बिल्कुल अपरेंट ऐसे नहीं दिख रहा है। पुलिस कप्तान का अगर आपने बहाली किया है, हमने नहीं किया है। आपकी बहाली हुई है, हाँ मेरी बहाली हुई है। आपकी बहाली अगर गलत हुई है, आप एलिजिबल नहीं थे उसके लिए, हम एलिजिबल, जैसा एलिगेशन है हम एलिजिबल था, वही एलिगेशन तो है। इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि आप एलिजिबल हैं। तो इन्वेस्टिगेशन हुआ ना, इन्वेस्टिगेशन में हुआ, हाँ इन्वेस्टिगेशन हुआ। बट दैट हैज बीन फाउंड ट्रू अगेंस्ट यू, दैट हैज बीन फाउंड ट्रू अगेंस्ट यू। अगर हुजूर परमिट करे तो एक पैराग्राफ सिर्फ पुलिस हम अभी आपको परमिट करने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन जरा आप ये ठहर करके सोचिए कि इस रीट में अब आपको रिलीफ मिल सकता है क्या? बिकॉज थिंग्स हैव ऑलरेडी प्रोसीडेड, द एलिगेशंस कंटेन्ड इन द एफआईआर हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड एंड अ चार्जशीट हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड। नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ That charge sheet is not under challenge in this writ application. दैट इज देयर। देखिए, We have recently learnt, your lordship. so you file an appropriate proceeding. You are a lawyer. Advise your client. I may be permitted one opportunity, your lordship. I will be filing. You file a fresh application. If you have a fresh cause of action, file a fresh application. Sir, Why to keep it pending now for another 1 month? After 5 years, we are taking up this case. लिखिए, it may be allowed, we may be allowed to amend this application, my lord, being on record. I am giving you liberty. Instead of amending this application, file a fresh application. So much homework have No, done, my no, lordship. that will give you an opportunity to place on record your grounds for assailing the charge sheet. You will have to come with fresh grounds. That ground can always be added in the amendment application. That can always be done, no doubt. That That can always be done, but you should have been vigilant about it. that can be added. When the matter is called out after 5 years, you will start making prayer for time. No, I'm not seeking time. You should have done this exercise prior. I'm not seeking time. कब फाइल हुआ है चार्ज शीट? चार्जशीट ये तो पता नहीं है, फोन पे पता पता चला ही है। नहीं है, तो फिर लिखिए, Lord Counsel for the petitioner has informed this court that after investigation into the allegations made in the first information report, police has already submitted a charge sheet. Full stop. Lord Counsel is not aware as to when the charge sheet has been filed. Full stop. He has no instruction with regard to it, but somehow he knows that the charge sheet has been filed. Full stop. On the query made by this court as to whether order taking cognizance has been passed, Lord Counsel submits that presently he is not aware of it. Cognizance has not been taken. Lord Counsel submits that order taking cognizance has not been passed. Full stop. Lord Counsel for the state is present. Next, Lord Counsel for the petitioner has taken this court through the allegations made in the first information report. Full stop. The submission is that the FIR is liable to be quashed on the ground of its being malicious prosecution on the basis of an order passed by the Honorable Division Bench of this court in CWJC number 13253 of 2016. Full stop. Next. On perusal of the first information report, it appears that the allegation against the petitioner number 1 is that she got appointed as a teacher
In August 2013, in connivance with the co-accused, who are petitioner number, co-accused who is petitioner number 2. One. Asman Nizam is petitioner number 1. Yes. And Muhammad Nizamuddin is petitioner number 2. Yes. Where is Asman Nizam. Sophia Nizam? Sophia Nizam is not. Sophia Nizam is not before the court. Not before. अच्छा, allegation against these two petitioners. इसलिए तो हुजूर कह रहे हैं कि एक पैराग्राफ हमको फाइनल रिपोर्ट पढ़ने का अवसर दिया जाए। एक हम आपको दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी। क्या एक पैराग्राफ क्या पढ़ना चाह रहे हैं? एक पैराग्राफ जो इनका रिपोर्ट है एसपी का, हुजूर पेज नंबर हुजूर ये बताइए, जब इन्होंने चार्जशीट फाइल कर दिया वो हम समझ रहे हैं। कैन दिस कोर्ट लुक इनटू दैट वन रिपोर्ट एंड टेक ए व्यू ऑन दैट बेसिस? कैसे ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है उस पे हम कह रहे हैं, कैसे ये प्रोसिक्यूशन मैलिशियस? उसको आप चैलेंज कीजिए ना। तो इसलिए if cognizance is taken against you, इस रिट पिटीशन को अमेंड करने दिया। if cognizance is taken against you, magistrate के सामने है अभी चार्जशीट, magistrate has option to differ with the police report. If the magistrate takes cognizance and issues summons to you, you will have an opportunity to challenge that, and there you can demonstrate everything. Why I am reluctant? Because it's a writ application of 2017. और अगर आप इतना ही करना था तो you should have been vigilant while pursuing your remedy. कोरोना की वजह से कुछ हुआ नहीं तो नहीं तो अभी तो कोरोना, हम लोग पिछले 8 महीने से तो कोरोना नहीं चल रहा है. We are running the courts. It becomes very difficult for the court to proceed. कोई भी मैटर टेकअप हो रहा है, या तो लॉयर्स आर नॉट अपीयरिंग, या अपीयर करते हैं तो कहते हैं कि जरा हमको इंस्ट्रक्शन लेने के लिए समय दे दीजिए. एकदम कॉमन रिचुअल हो गया. व्हाट द कोर्ट विल डू? बाहर पेंडेंसी की बात होती है, कोर्ट के अंदर ये सिचुएशन हो रहा है. Therefore, I am reluctant in granting time. क्या लिखा? It appears on perusal of the FIR, it appears that the allegation against the petitioner number 1 is that petitioner against both the petitioners is that they had connived in the matter of illegal appointment of one of the co-accused Sophia Nizam, and on the basis of forced attendance register, salary was being withdrawn in the name of the co-accused. Full stop. Next. Since this court has noticed that the case has been found true against the petitioner, and a charge sheet has already been submitted, which is not under challenge in the present writ application, even though the writ application is pending since the year 2000. Not against petitioner number 2, only against petitioner number 1. Case has been found. What about these two petitioners? Not against Milords Muhammad Nizamuddin, who is petitioner number 2, Milords. Against him, Milords, the final report has been submitted. As we then it becomes infructuous. Then it becomes infructuous. Against petitioner number 1, charge sheet has been filed. पूरी बात बताइए. जी हाँ, वही हमको इंफॉर्मेशन है. इस मिल में बात कर रहे हैं हम लोग. ऊपर लिखिए, charge sheet has been filed against petitioner number 1, whereas it is informed that police has submitted a final form in respect of petitioner number 2, showing him not sent up for trial. यही है ना? यही है ना? ठीक, उसको दे दीजिएगा, ड्राफ्ट देख लेंगे. नीचे लिखिए, since
Police is said to have submitted a final form showing petition number 2 as not sent up for trial. This application as regards him has been rendered infructuous. Full stop. So far as petitioner number 1 is concerned, if so advised, she may challenge the charge sheet and the order taking cognizance, if any, in an appropriate proceeding. Full stop. This writ application as framed has become infructuous. It is disposed of accordingly.